Maths 1, Chapter 1, Linear Equations in Two Variables, Exercise 1.5, Question number 1. In 1.5, all the questions are word problems. In word problems, you have to remember one thing. The verbal statements should be converted into mathematical equations. It is easier to get the solution. जो भी वर्ड प्रॉब्लम है यू टू रीड अगेन एंड अगेन, और वर्बल जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आपको मैथमेटिकल कंडीशन में ट्रांसफ़र करना है. कैसे करना है, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज टू नंबर्स डिफर बाय 3. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर्स. दो नंबर्स है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब एक नंबर ग्रेटर है एक नंबर स्मॉलर है. सो विल एज्यूम लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y. द फर्स्ट कंडीशन इज टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर आप डिलीट करते हो तो आपको 3 मिलेगा. दोनों का डिफरेंस 3 है. डिफरेंस आएगा तो माइनस साइन आएगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ग्रेटर नंबर x minus smaller number y will give us 3. I'll number this as equation 1. Second condition देखो क्या है. The sum of what? Twice the smaller number. Sum आएगा तो प्लस साइन आएगा, डिफरेंस आएगा तो माइनस साइन आएगा. यहाँ पे है सम तो प्लस आ गया. Sum of what? Twice the smaller number. Smaller number क्या है? y. Twice the smaller number क्या होगा? 2 into y, 2y. And thrice the greater number. Greater number क्या है? x. Thrice the greater number, 3 into x is 3x. So 3x plus 2y is equal to how much? The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Is equal to 19. We'll number this as equation 2. Once we get these two equations, we can solve it by any method. Elimination method, substitution method, graphical method or Cramer's rule. We will be using elimination method. For elimination method, you all know that coefficients of x or coefficients of y should be same. So it is easier to solve the sum. यहाँ पे क्या है, प्लस 2y दिखाई दे रहा है इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 1 में y है, माइनस y है, तो आई विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन थ्रू आउट बाई 2. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू y 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6. आई नंबर दिस एज इक्वेशन 3. यहाँ पे माइनस 2y मिला है, यहाँ पे प्लस 2y है, तो वी कैन ऐड दिस टू इक्वेशंस. अगर दोनों का साइन समझो सेम है, प्लस 2y, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट. यहाँ पे साइन इज अपोजिट, सो विल ऐड इट. एडिंग इक्वेशंस 3 and 2. इक्वेशन 3 इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन 2 इज प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. माइनस 2y प्लस 2y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा. 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 19 25. 5x इज 5 इंटू एक्स, तो ये 5 जब वो साइड में जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा. x इज इक्वल टू 25/5, हेंस x इज इक्वल टू 5. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज x इज इक्वल टू 5 in any of these equations. I'll substitute x is equal to 5 in equation 1. Equation 1 is x minus y is equal to 3. x की जगह पे I'll substitute x by 5. So this becomes 5 minus y is equal to 3. 5 वो साइड में भेज दो तो प्लस 5 माइनस 5 बन जाएगा. So I get minus y is equal to 3 minus 5. So minus 5 is equal to 3 minus 5 is minus 2. दोनों साइड से माइनस साइन निकल जाएगा. I get y is equal to 2. x और y की वैल्यू मिल गई. So x is the greater number, that is 5,
and y is a smaller number, that is 2. So the required numbers are 5 and 2. Maths 1, practice set 1.5, question number 2. These are all word problems. The question is, complete the following. One rectangle is given and written as I am a rectangle. Find the values of x and y. Find perimeter and area. You know, in a rectangle, the opposite sides are equal. So this side and this side both are equal. Similarly, this side and this side will be equal. So we'll write opposite sides of rectangle are equal. So we will equate these sides. We get 2x plus 5 plus 8 is equal to 4x minus y. This is the first condition. So we'll shift all the variables on the left hand side and the constant, the number, will shift to right hand side. So this becomes 2x plus 4x. When it will shift to the left hand side, it will become minus 4x plus y. This minus y will, when it will shift to left hand side, it will become plus y is equal to plus 8 will go to the other side, it will become minus 8. 2x minus 4x is minus 2x plus y plus 5 plus 2y is equal to minus 8. We will divide the whole equation by minus 2. तो क्या मिलेगा अपने को? Minus 2x divided by minus 2 is x plus 2y divided by minus 2 is minus y is equal to minus 8 divided by minus 2 is plus 4. And these are the other two sides. 2y is equal to x plus 4. This is the other equation. 2y is equal to x plus 4. This x will shift to the other side. It will become minus x plus 2y is equal to 4. We will number this as equation 2. यहाँ पे plus x है, यहाँ पे minus x है. It will get automatically cancel. So we'll add these two equations by elimination method. We'll find values of x and y. Adding equation number 1 and equation number 2. Equation 1 is x minus y is equal to 4. This is equation 1. Equation 2, minus x plus 2y equals to 4. This is equation 2. Minus x plus x will get cancelled with each other. Plus 2y minus y is plus y is equal to 4 plus 4, 8. Substituting y is equal to 8 in any of the equations, I'll substitute it in equation 1. We get x minus y की जगह पे आएगा 8 is equal to 4. Minus 8 वो साइड में शिफ्ट हो जाएगा, it will become plus 8. So we get x is equal to 4 plus 8, that is x is equal to 12. Now अपने को लेंथ और ब्रेड चाहिए, बराबर है? क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को खाली x and y की वैल्यू निकाल के नहीं रुकना है. We have to find, the question is find the length and the breadth, find x and y, and you have to find perimeter and area. For perimeter and area we need length and breadth. आपको पता है perimeter of rectangle फॉर्मूला क्या है? 2 length plus 2 breadth. तो अपने को पहले लेंथ ब्रेथ निकालना पड़ेगा. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो पहले अपने को लेंथ ब्रेथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पेरीमीटर एरिया निकाल सकते हैं. नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता है, दिस इज कॉल्ड लेंथ. तो आप ये जो है 4x माइनस वाई, उसमें भी एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो लेंथ, या 2x प्लस वाई प्लस 8, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेंथ निकाल सकते हो. कोई भी एक इक्वेशन ले लो. ये छोटा लग रहा है 4x माइनस वाई, तो आई यूज़ दिस. नाउ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल l इज इक्वल टू 4x माइनस वाई. वैल्यूज़ डालो फटाफट. 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने? 12. 4 इंटू 12 माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 40. ये आ गई लेंथ. Now breadth of the rectangle you can use 2y और x plus 4, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. Breadth of the rectangle is equal to b is equal to 2y. मैंने 2y लिया है. 2y is equal to 2 into 8, that is 16. Length और breadth मिल गई है. Now we can find out
perimeter and area easily. Perimeter of rectangle, the formula is 2L plus 2 breadth. So this is equal to 2 into length हम लोगों ने 40 निकाली है, देखो L is 40, so 2 into 40 plus 2 into breadth, breadth है 16 plus 2 into 16, 2 into 40 is 80 plus 2 into 16 is 32, so we'll get 112. So a perimeter is 112 units. Similarly, area of rectangle is equal to length into breadth. Length is 40, 40 into breadth is 16, 16 is equal to 640. Area is 640 square units. With this we finish the sum. खाली एक्स वाई की वैल्यू निकाल के सम नहीं खत्म होने वाला, रिमेंबर दैट. पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ब्रेड, उसके बाद पेरीमीटर, उसके बाद एरिया. देन ओनली दिस सम इज कंप्लीटेड. मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 3. The question is the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. एजेस वाले सम हम लोगों ने लास्ट ईयर किए हैं 9th में. वेरी इजी सम्स. खाली ये जो कंडीशंस दी है वो अपने को मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करने हैं. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. तो पहले अपने को एज्यूम करना पड़ेगा. विल एज्यूम लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई ईयर्स. बराबर है. फादर्स एज वी एज्यूम एज एक्स and son's age we assume as y. What is the condition? The sum of father's age is x. So according to first condition, x, the sum of plus आएगा, the sum of father's age and twice the age of his son. Son's age is y. So according to first condition, sum of father's age and twice the age of his son. So x plus 2 times y, that is 2y, is equal to, is 70, is equal to 70. See the condition again. The sum of father's age x, father's age is x, x, and twice the age of his son. Son's age is y, twice मतलब 2 times. So 2y, sum मतलब plus x plus 2y is 70, is equal to 70. This is equation number 1. What is the second condition? If we double the age of the father, according to second condition, father's age is x. If we double it, that means 2 times x. If we double the age of father and add it to the age of his son, son's age is y. So 2x addition plus y. The sum is 95. That is equal to 95. According to second condition, 2x plus y is equal to 95. This will number as equation 2. दो equation मिल गया है. We will be solving this by elimination method. हम लोग कोई भी method use कर सकते हो. I'll repeat, but I am using elimination method because I find it very easy. Elimination method में either the coefficients of x or the coefficients of y should match. यहाँ पे कुछ भी match नहीं हो रहा है. So what I'll do is that I'll multiply equation 1 by 2. This is equation 1. I'll multiply it by 2. So I get 2 into x, 2x, plus 2 into y, 4y, is equal to 70 into 2, 140. I'll number this as equation 3. Equation 2 में भी 2x है, equation 3 में भी 2x है. So now we'll subtract equation 2 from 3. Equation 3 minus 2. 3 minus 2. 3 equation number 3 लिख लो. 2x plus 4y is 140. 2x plus 4y is 140. Minus subtraction है. 2x plus y is 95. 2x plus y is 95. In subtraction, second equation में जो भी signs है वो सब change हो जाते हैं. You are aware. So plus 2x बनेगा minus, plus y बनेगा minus, plus 95 बनेगा minus. 2x minus 2x will get cancelled.
plus 4y minus y will give us 3y is equal to 140 minus 95 is 45. So we get 3y is equal to 45. 3y is 3 into y. When this 3 will go to the other side, it will become divided by. So we get y is equal to 45 divided by 30. Hence y is equal to 15. y मिल गया. अभी y की वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में भी डाल दो और x की वैल्यू निकालो. I'll substituting y is equal to 15 in equation 1. So what I get? x plus 2y. y is 15. 2 into 15 is equal to 70. Equals to 70. So we get x plus 2 into 15 is 30 is equal to 70. So x becomes plus 30. वो साइड में जाएगा, minus 30 बनेगा. x is equal to 70 minus 30. x is equal to 40. x और y की वैल्यू मिल गई. x और y हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था? फादर्स एज वॉज x and son's age was y. So present age of father is 40 years and that of son is 15 years. Maths 1, practice set 1.5, question number 4. I'll read the question. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. Fraction का समय हम लोगों ने 9th में किया है. तो we know एक न्यूमरेटर एज्यूम करना पड़ेगा, एक अल्फ़ाबेट अपने को डिनोमिनेटर के लिए एज्यूम करना पड़ेगा. We'll assume let the numerator be x and the denominator be y. So our fraction becomes x upon y. अभी कंडीशंस क्या क्या देख लेते हैं. वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट्स इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन d is equal to is 4 more than twice its numerator. 4 more than twice its numerator. अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो and if you add 4 into it you will get denominator. Denominator is equal to 2 times numerator plus 4. According to first condition, we get denominator d is equal to twice the numerator 2 into n plus 4. Denominator we have assumed as y. So y is equal to numerator is x, 2 times x plus 4. We keep variables on the left hand side. So this 2x will shift to the left hand side. It will become minus 2x. So we get minus 2x plus y is equal to 4. We'll number this as equation 1. Now let's see about the second equation. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. According to second condition, numerator और denominator दोनों में से 6 subtract कर लो. d minus 6 n minus 6, denominator minus 6, numerator minus 6. What happens? Denominator becomes 12 times. 12 times बन जाता है. 12 times. When? 12 times of what? 12 times the numerator. When? If both the numerator and the denominator are reduced by 6. So d minus 6 is equal to 12 into n minus 6. d क्या है? d denominator is y. So y minus 6 is equal to 12 into numerator n is x. x minus 6. So we get y minus 6 is equal to 12 into x, 12x minus 12 into 6, 72. So 12x will shift to the left hand side. This becomes minus 12x plus y is equal to minus 72. This minus 6 will shift to the right hand side. It will become plus 6. So our equation becomes minus 12x plus y is equal to minus 72 plus 6 is equal to minus 66. We'll number this as equation 2. Equation 2 minus 1 will give us equation 2 लिख के ले लो. Minus 12x plus y is equal to minus 66 minus equation 1
-2x + y = 4. ये एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पे भी +y था, यहाँ पे भी +y है, तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा. एक इक्वेशन में से हम लोग दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन. तो सब्ट्रैक्शन है, एवरी साइन विल चेंज इन द सेकेंड इक्वेशन. -2x will become +y will become +4 will become -. -12x + 2x is -10x. +y will get cancelled with each other. So this becomes -66 - 4 is -70. दोनों साइड से माइनस साइन निकल जाएगा. We get 10x = 70. So x is equal to 70/10. Hence x is equal to 7. x की वैल्यू मिल गई. अभी हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये डाल सकते हैं. We'll substitute x is equal to 7 in equation 1 to find value of y. So this becomes -2 into x. x की जगह पे आएगा 7. This is -2 into 7 plus y is equal to 4. -2 into 7 is -14 plus y equals to 4. -14 will shift to the other side. It will become +14. So I get y is equal to 4 plus 14. Hence y is equal to 18. तो the required fraction is, अपना fraction है x/y. Value substitute करो. The required fraction becomes 7/80. Maths 1 practice set 1.5 question number 5. Word problem. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. See, we have to convert these statements into mathematical equations. You know that. Two types of boxes are there, A and B, which are to be placed in a truck. So we'll assume, let the weight of one box of type A be x kg and that of one box of type B be y kg. मतलब टाइप ए का जो वन बॉक्स है उसका वेट है x kg. सिमिलरली टाइप बी का जो वन बॉक्स है उसका वेट है y kg. करेक्ट. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक? कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज 10 टन्स. यहाँ पे वी हैव एज्यूम्ड इन kg, सो विल कन्वर्ट कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इनटू kgs. वी नो 1 ton is equal to 1000 kg, so 10 tons become 10,000 kg. According to first condition, see the condition. When 150 boxes of type A, see, one box of type A weight is x kg. So if there are 150 boxes of type A, the total weight will be 150x. अगर A टाइप के एक बॉक्स की वेट है x kg, तो A टाइप के 150 बॉक्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसका वेट बन जाएगा 150x. And 100 boxes of type B, again weight of one box of type B is y. So if there are 100 boxes of type B, weight will be 100y. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. 150x plus 100y is equal to 10 tons को हम लोगों ने कन्वर्ट करके लिया है 10,000. बराबर है. तो सब कुछ केजीज में आ जाएगा. हर एक नंबर में 0 है, सो वी कैन रिड्यूस दीज नंबर्स. विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 10. वी गेट 150/10 is 15x plus 100/10 is 10y is equal to 10,000/10 is 1,000. We can still reduce this equation. 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. Dividing the whole equation by 5, we get 5 3s are 15, so this becomes 3x plus divide 10y by 5, we get 2y is equal to dividing 1000 by 5, we get 200. We'll number this as equation 1. What is the second condition?
when 260 boxes of type A, so this becomes 260x, are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes plus 40y, so that it is fully loaded. Full capacity है 10,000 kg truck की, so we get 260x plus 40y is equal to 10,000. This is second condition, as per the second condition. Again हर एक नंबर में 0 दिखाई दे रहा है. We can reduce these numbers. We'll divide this equation by 10. We get 260x by 10, we get 26x plus 40y by 10, we get 4y equals to 10,000 by 10, we get 1,000. Again we can reduce the whole equation. We can divide the whole equation by 2. 26x upon 2 is 13x plus 4y upon 2 is 2y is equal to 1,000 upon 2 is 500. We'll number this as equation 2. Equation 2 minus equation 1 will give us equation 2. See, if we continue with these equations, ये हम लोगों ने जो reduce किया है, अगर आप reduce नहीं करते हो तो भी x and y की वैल्यू यही आने वाली है. लेकिन आप जितने इक्वेशन के नंबर जितना रिड्यूस हो जाएगा उतना सॉल्विंग के लिए इजी पड़ जाता है. दैट इज़ वाई वी नॉर्मली डिवाइड दिस इक्वेशंस और स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अपने को इजी पड़ जाता है. सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 इज 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500. दिस इक्वेशन 3 माइनस 3x plus 2y equals to 200. This is equation 2. When you subtract, all the signs in the second equations change. So 3x will become minus, 2y will become minus, and 200 will become minus. 13x minus 3x will give us 10x plus 2y minus 2y will get cancelled with each other is equal to 500 minus 200 is 300. If 10x is equal to 300, x becomes 300 upon 10, hence x is equal to 30. Substituting this value of x is equal to 30 in any of the equations, we'll substitute this in equation 1. We get 3 into x, x की value है 30, so this becomes 3 into 30 plus 2y is equal to 200. 3 into 30 is 90 plus 2y is equals to 200. This 90 will shift to the other side of the equal to sign. It will become minus 90. So we get 2y is equal to 200 minus 90. Hence 2y is equal to 110. Y becomes 110 divided by 2. Hence y is equal to 55. Hence x और y की वैल्यू मिल गई. Weight of box of type A वही पूछा था. The question was find the weight of each type of box. So weight of box type A is 30 kg and that of box type B is 55 kg. Maths 1, practice set 1.5, last question, question number 6. We have seen all the word problems before. In the word problem, you know, you have to read the question again and again and convert the statements into mathematical equations. The question is, out of 1900 kilometers, Vishal travelled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 kilometers per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal travelled by bus. इसमें थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा फिजिक्स है. लास्ट ईयर आपने ये सब फॉर्मूले किए. व्हाट विल डू इज दैट, फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम. तो अपने को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्या हुआ है, विशाल हैज़ ट्रैवल्ड आउट ऑफ 1900 किलोमीटर. दैट मीन्स विशाल हैज़ ट्रैवल्ड 1900 किलोमीटर्स. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस and some by aeroplane. We'll draw a line. Suppose this is the total distance Vishal has travelled. What is the distance? How much? 1900 kilometers. He has travelled few distance by bus and few by aeroplane. तो यहाँ पे हमने इतना बस के लिए लिया है, एज्यूम किया, और इतना एरोप्लेन के लिए एज्यूम किया. बस travels with average speed of 60 kilometers per hour.
and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. देखो, this total distance 1900 kilometers he has covered in 5 hours. बराबर है? तो let's first assume, let the distance traveled by Vishal by bus be x kilometers and by aeroplane be y kilometers. We have to form two linear equations with two variables. ये तो हम लोग करते ही हैं. तो let us assume the distance covered by bus is x kilometers and the distance traveled by aeroplane is y kilometers. Let the distance traveled by Vishal by bus be x kilometers and by aeroplane be y kilometers. According to first condition क्या है? Out of 1900 kilometer, Vishal travelled some distance by bus and some by aeroplane. So according to first condition, बस से ट्रैवल किया हुआ x किलोमीटर और एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ y किलोमीटर, दोनों मिलके 1900 किलोमीटर्स बन जाता है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x plus y is equal to 1900. We'll number this as equation 1. Last year in physics you studied speed is equal to distance upon time. बराबर है? तो टाइम ऊपर ले लो, स्पीड नीचे आ जाएगा. Hence टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जैसे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि x किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाय बस एंड y किलोमीटर इज ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन. Similarly, see, read the question. But bus travels with average speed of 60 kilometers per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. तो टोटल ये T1 hours by bus plus T2 hours by aeroplane, ये दोनों मिला के कितना होता है? 5 हो जाता है, 5 hours हो जाता है. Now we know the formula time is equal to distance upon speed. So first we'll assume time required by bus. बस ट्रैवल के लिए जो भी टाइम लगा है that is equal to T1. We'll assume it as T1. T1 becomes as per the above formula time is equal to distance upon speed. T1 is equal to कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है बस से विशाल ने? x किलोमीटर्स कवर किया है. और स्पीड क्या दिया है देखो बुक में, बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. सो दिस बिकम्स T1 is equal to x upon 60. Similarly, time required by aeroplane is equal to T2. Will assume time required by aeroplane, कितना टाइम एरोप्लेन से उसने लिया है? T2 is equal to distance upon time again, distance upon speed again. So this is equal to एरोप्लेन का डिस्टेंस है y और एरोप्लेन का स्पीड देखो क्या है? The average speed of aeroplane is 700 kilometers per hour. So time required by aeroplane T2 becomes distance covered by aeroplane, that is y kilometers, divided by 700 kilometers per hour is the speed of the aeroplane. We know दोनों time taken by bus plus time taken by aeroplane दोनों मिलके कितना होता है? 5 hours होता है. So according to second condition, T1 plus T2 is equal to 5 hours. 5. T1 की value what we have found out? X upon 60. So we get x upon 60 plus T2 we have found out is y upon 700 plus y upon 700 is equal to 5. Cross multiply करके ले लो. 700 into x, 700x plus 60 into y, 60y, the whole divided by 60 into 700 is equal to 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लो अगेन. 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 60 इंटू 700 इंटू 5. यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों. सी ईयर 5 इंटू 60 इंटू 700. हैंस वी गेट 700x प्लस 60y. इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 2,10,000. दिस आर बिग नंबर्स. नंबर जितने भी ग्रेटर होंगे उतना कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा डर लगता है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिड्यूस नंबर्स. नंबर्स जितने छोटे हैं उतना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. सब में 0 0 दिखाई दे रहा है. विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 10. 700x डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 70x प्लस 60y डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 6y इज इक्वल टू
2,10,000 divided by 10 is 21,000. Again, you can divide the whole equation by 2. So you get 70x divided by 2 is 35x plus 6y divided by 2 is 3y is equal to 21,000 divided by 2 is 10,500. We'll number this as equation 2. Remember one thing, we can use any of the methods to solve these two linear equations. Elimination method being the easiest, I'll be using it. For elimination method, either coefficients of x or coefficients of y from both the equations should match. Equation 1 is x plus 5 is equal to 1900. I'll multiply equation 1 by 3. Multiplying equation 1 by 3, what I get? 3x plus 3y is equal to 1900 into 3 is 5700. We'll number this as equation 3. You know, for elimination method, either coefficients of x or coefficients of y should match. If the sign is same, you have to do subtraction. If the sign is different, you have to go for addition. Equation number 2 minus 3 will give you 35x plus 3y plus 10,500 minus equation number 3 is 3x plus 3y is equal to 5700. Subtraction hai, you have to change signs everywhere. 35x minus 3x will give you 32x plus 3y minus 3y will get cancelled is equal to 10500 minus 5700 will give you 4800. Hence x is equal to 4800 upon 32. आंसर इज 150. पहले 16 से डिवाइड कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर लो, आंसर विल बी 150. See, the question is find the distance Vishal travelled by bus. We assume the distance travelled by Vishal by bus is x kilometers. तो खाली x की वैल्यू निकाल के हम लोग रुक सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पूछी ही नहीं है. So we'll write the answer. The distance Vishal travelled by bus is 150 kilometers.